I would like to request the guests that are settled behind to please take the seat to please return. Welcome back. Let us begin this session. And as previously told, the session will revolve around discussion about digital financial inclusion. I would like to request Deputy Governor, Mr. Salimullah, State Bank of Pakistan, to provide his opening remarks about digital financial inclusion being the future of Pakistan and to provide insights into the matter. Please welcome Mr. Salimullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. And it was a beautiful that provided that energy with respect to this start of the Financial Literacy Week. The objective of this week is to give that focus and that push towards our financial inclusion efforts. And for me to be here to share my thoughts on all these financial inclusion efforts. Financial inclusion, you see that is a very, very critical part of our strategic objectives. We have been pursuing these objectives for the last about a decade or so, over a decade. And as you have seen in the video that was presented in the first session, that we have been able to achieve many strides in this respect. And starting from just 11% in 2008 probably, and then we reached to 16% in 2015. And in that aspect, let me give one credit to my dear colleague Sayyid Irfan Ali, who is sitting just in front of me, that in 2008 he spearheaded the project of branchless banking, and he had that push and energy to propagate the objectives and the potential that the branchless banking could bring. You could see that just in 7 years the outreach and the financial inclusion levels registered a 5 percentage point increase. But then in 2015 again, another proactive approach led by Irfan Saab and his team, I would say, that they allowed the remote opening of branchless banking accounts. Previously, it was something that you had to visit a branchless banking agent or some sort of a physical branch or an agent network to get your account open. But when we allowed the remote opening of bank accounts, just in 3 years, you would have seen in the video, just in 3 years from 2015 to 2018, we have seen the account opening outreach increasing to 50% from 16%. So that's a big jump. And that brings us
to the very topic of today, that financial inclusion through digitization. So we must leverage the technology. If we want to extend our outreach to the masses across the country, then we have to leverage that technology. And it is really, really encouraging and heartening to say that right now we have more than 113 million branchless banking accounts. And that's a big, big achievement to me. But still, a huge distance has to be covered. And there are two basic aspects of that distance that is to be covered. One, that relates to reaching the remaining segment which is still unbanked, not having the access to the financial services. This is the one aspect, and we must use and leverage the technology for reaching out to the people who have not yet been reached. The second aspect, which to me is even more important, it is that to enable the existing ones, these 113 million or overall bank accounts, when we see 128 million, 27, 28 million, how many of these are getting adequate amount of financial services? Just a bank account is not enough. And we have seen that this surge in the financial inclusion levels from 11% to 60% right now, that is largely driven by these branchless banking agents and these microfinance banks and microfinance institutions. And bulk of these accounts, they are being used for remittance purpose, which is again not something which is not important. It's very important. But what we see that when I sent a remittance from here to, say, my family in a particular village, the ultimate objective of that beneficiary is he will go to the agent and get the cash from that agent. So that is the service level which is available to him or her by now. And a very, very small segment you would see that is having access to a package of financial services, that is having access to the savings services, that is having access to credit services, the insurance services, and blah, blah, blah. So, as I said, that the now future agenda is that how to outreach to the people who have not yet been served, and two, to improve the package that we are providing to them. And one thing that I think all of you would agree, that these financially excluded segments, these segments are the most vulnerable segments of our society, most probably. The one that are having access to package of services, they are relatively better off. They can manage their risks, they can manage their cash flows, blah, blah, blah. But the one who are excluded, they are the most vulnerable. So, the objective of all these financial inclusion efforts, it is that how can we improve the well-being of these masses? How can we enable them
to have access to business opportunities? How can we enable them to have access to employment opportunities? If with this perspective and objective we are undertaking our efforts, then you would be able to see that there will be energy in our staff, in our people who are working with. Because there should be a purpose behind. The purpose should not be that I need to make money. You will be making money. But the objective should be that let's do something for the well-being of the masses we are serving. So let me give my thought on this, that the core focus of our field formation should be that how can we improve the well-being of our clients? How can we make things more efficient, more cost-effective, more simpler for them? How can we help them in establishing various micro-enterprises? You see that there is, unfortunately, the education system in our country is largely producing the clerks. We are producing the people with very, very limited skills. There is a dire need to produce people, to produce a workforce which is a skilled workforce. And how that can be, how these banks and financial institutions, particularly the microfinance banks and the people working at the grassroots level, they can help and facilitate in this. There could be strong linkages between these financial institutions and the vocational training institutes. We must collaborate with the education, be it the vocational training institutes or be it the normal education institutions or the professional education institutions. We must collaborate with them that how can we create a culture of entrepreneurship in the country. Because it's not possible that each and every student graduating from our universities would be able to find a job. We must create those business opportunities. And in those business opportunities, the role of the banks, including the microfinance banks, is very, very critical. So as I was saying and emphasizing, that focus should be that how can we improve the well-being of our customers. And we must train our staff in a way that they are customer well-being oriented. When your customer will be progressing, you must be progressing. They say it's a tried and tested fact. When my clients are satisfied with me, I must be growing, because they will become my ambassadors and I will be reaching out to more and more people. So that is to be done. And how can we better use the technology? How can we better use the digital platforms to have that customer facilitation and customer well-being? I would like the panelists to deliberate on that how can the digital platforms which are now available and which were not available 10 years back, how can we better use them? How can these 113 million branchless banking account holders can be facilitated in accessing more and more financial services? How can we create an ecosystem whereby they are not just withdrawing the cash from the agent, but rather they are using their wallet for making all their payments? And
developing their history, developing their cash flow history. By now, you see that we have not yet fully utilized the potential of the digital platforms with respect to developing the cash flow history of the clients. And if we are able to develop that cash flow history, you would see that these clients would become more bankable. Right now, one of the risks that doesn't allow banks to go aggressively towards SME finance and microfinance and small enterprises finance is that the information asymmetries. So the use of digital platforms, when we would be encouraging more and more people to use digital platforms, we would rather be helping them to develop their cash flow history so that the banks are better able to make an assessment with respect to their business size and the cash flow size and the repayment abilities, blah, blah, blah. So on these lines, I would like to conclude that let's see, and I expect from all the panelists to deliberate on that how can this digital platform be better utilized for the customer well-being, for improving not only the outreach of financial services, but let's see that how can these underserved people, they are already there, they are already with you. 130 million is a very large number. They are already available with you. We need to come up with a strategy that how can we better equip them to have their well-being. Thank you very much. So how can we improve the well-being of the masses? As we know, the excluded are the most vulnerable. Let's collaborate and create an environment that is conducive to inclusive growth. Let's go digital. We will now commence the panel discussion, and I would like to thank Mr. Salimullah for sharing your visionary insights with us, which will indeed serve as a guiding light. For the panel discussion, the moderator is Ms. Halima Iqbal. She is the founder and CEO of Uran, which is an online money committee platform empowering women with alternative financial solutions. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Halima Iqbal. Over to you, ma'am. Okay. Thank you so much for having me here. I'm very, very honored to be sharing this platform with my esteemed guests. My first guest is Mr. Ahmed Salimi. He is the CEO of Digit Plus. He's a leading figure in Pakistan's mobile financial services with over 10 years of experience in developing innovative financial technologies. Key contributions include his role in the early development of Jazz Cash, a top mobile wallet, and leading the digital platform for a major Pakistani bank. As a CEO of Digit Plus, Ahmed Saab aims to enhance financial inclusion in agriculture, merging fintech with the sector to benefit farmers. Under his leadership, Digit Plus gained a commercial license from State Bank of Pakistan and attracted 40,000 customers in 2 months, processing over 1.8 billion rupees in transaction. This success highlights Mr. Ahmed's commitment to using technology to support Pakistan's agricultural economy and financial inclusion. Welcome, Mr. Ahmed. My next guest is Mr. Sohail Jawad Saab, with over 25 years in Central Bank, currently serves as the Executive Director of Digital Financial Services Group, focusing on digital finance, innovation, and regulation. His key achievements include leading the implementation of Pakistan's instant payment system, RAST, the real-time gross settlement system,
the Roshan Digital Account Scheme for non-resident Pakistanis, and Pakistan's first national payment system strategy, and the T4 core banking system at the State Bank of Pakistan. Sohail Jawad Saab holds an advanced degrees in applied sciences, statistics, and an MBA. He's also an fellow alumni of University of Waterloo. My next guest is Ms. Aban Haq. She's the head of member engagement and project management at the Alliance of Financial Inclusion, focusing on strategic planning and governance. With 20 years in international development, she previously led a program for women-led startups at Karandas, Pakistan, and has worked with notable organizations like the World Bank. Ms. Haq, a Winfield Hoffman and Fulbright scholar, holds an MPhil from Oxford University and an MA from Williams College. Last but not the least, joining us remotely is Mr. Abrar Ahmed Mir, serving as the Chief Innovation and Financial Inclusion Officer at HBL, focusing on bank's digital, data, and inclusion strategies. With a career at the nexus of business and technology, he has a strong record in strategic development, business transformation, and launching new business models. Mr. Abrar is known for his innovative approach and commitment to expanding financial inclusion through digital technologies, a leader in fostering a culture of collaboration and innovation. He has significantly contributed to the transformation of HBL into a data and AI-driven organization. With over 30 years of experience and roles on multiple boards, including as chairman, Mr. Abrar's background includes engineering and an MBA from the USA. Welcome all. I'm extremely excited about this conversation. Does this work? Yes. Thank you all. Starting off with a general question and connecting it with the theme of today's conversation, how do you all perceive the evolution of digital financial inclusion in Pakistan from its early stages to now what we term as Era 2.0? What are the key milestones and shifts in the strategies that we're seeing? Starting with you, Ms. Aban. Well, thank you very much. It's a real honor and privilege for me to sit on this panel with such esteemed and experienced professionals. You can't hear me? How about now? अब जब से ये कोविड हुआ है हम ये पहला सवाल करते हैं can you hear me, can you see me? So you can hear me now. So just want to start with thanking the State Bank of Pakistan for giving the Alliance for Financial Inclusion an opportunity to be part of this really exciting event, the Pakistan Financial Literacy Week 2024, the first of its kind. For those who may not be familiar, if you allow me, Halima, I'll just take 30 seconds to talk about what AFI is and how State Bank figures in the AFI story. So the Alliance for Financial Inclusion is a member-based organization. It's a network of financial sector regulators and policy makers from 82 emerging and developing economies, and State Bank of Pakistan is actually one of the founding members of this network, and currently it also serves on the AFI board of directors. So it's really, it's a privilege to be part of this event and to represent AFI. So I think there are other panelists who will talk more about Pakistan, and I will just share with the audience a little glimpse from Malaysia in a minute. But before that, I just wanted to also say that, as some of you may have realized, I've been associated with
Pakistan's financial inclusion journey for many, many years in different capacities, initially with the Pakistan Microfinance Network. So I had the privilege to watch that sector grow and the leading role that State Bank, guided that sector to the development, and then some of these milestones around branchless banking. And they all at that time, I think, were leaps of faith by the State Bank of Pakistan. And I think the results of those can today be seen, and I think SPP is really amongst champions for this cause and has put its money where its mouth is. And I also want to recognize, for example, the banking on equality policy that has recently been launched, and the way that exclusion and inclusion has been looked at in that policy. I think it's an example in the international community of regulators and policymakers. So just with that opening, I thought we've heard a few comments about clients, well-being, health, how far we have come, where we are going to go. So I just wanted to share a photograph with you, if we can see it on screen. Okay, as you can tell, that's the photograph. I'm not a very good photographer. This was taken by me during my hike in Kuala Lumpur a couple of weeks ago when I knew I'm coming to this event. So this is a mountain, a small hill, nothing compared to the mountains of Pakistan, but just a small hill outside KL, about 1 hour away, and you hike for about 2 hours to reach the peak. And when you get there, you can see people are enjoying the view from there. And what you can see here is a micro entrepreneur, a woman, who is selling ice lollies. So they pack these ice lollies in these plastic bags. And what you can see, if you can't, because I think Suhail Jawad Saab is hiding it behind him, is a QR code. Yeah, and I thought this was a very, very powerful image to showcase how far the world has come in digital financial inclusion, inclusion of women, and inclusion of micro entrepreneurs. So what you see here is a result of, for now, today, maybe this woman and I take it for granted that I can use my phone, make a payment of 2 ringgit on the top of a mountain, no big deal. It's something we take for granted. And that is, I think, a testament to the work that organizations like the State Bank of Pakistan and financial service providers and the international community has done over the past 2 decades. It is really a sector effort that makes it possible to have the connectivity, the right financial product, the entrepreneur's knowledge and awareness about the product being available, and then for me to use it as a client and to know how to open an app and make that payment. And I think it also, for me, captures where we want to go from here. This is the starting point for me for 2.0, and I think we heard the Deputy Governor talk about what needs to come next. And I think this is where we are, and this, you have this customer, she is a micro entrepreneur who has needs for her business, for her personal life. How do we offer the products, the services, the reliable, safe, digital financial services, because like he said, she's also very vulnerable. The amount of money that she's going to make on this day is probably what's going to feed her family, and she can't afford to lose that money. So it's not just about making digital financial services accessible, but making sure that they are safe as well. So I just wanted to share this as a starting point for our conversation today, and I look forward to going deeper into some of these points. Thank you very much, Halima. Thank you, appreciate it. I think this is very, very exciting, and I think with the newer innovative technologies coming into Pakistan, especially with RAST and the QR code, the conversation that is moving forward, I would love to learn a little bit more from you, Suhail Jawad Saab. How do you see the shifts happening within this ecosystem, and what's that vision looking like? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Halima. I think थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आज से 10 साल पहले हमारा इकोसिस्टम किस तरह का था. हमारे पास कितनी पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स थी, कितने कार्ड्स थे. आई थिंक ई कॉमर्स तो सारा कैश ऑन डिलीवरी था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2012 2013.
और मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी. एंड फास्ट फॉरवर्ड 10 years एंड यू कैन सी द चेंज दैट हैज़ हैपेंड. आज से 10-11 साल पहले, 12 साल पहले, आई कैन स्टिल रिमेंबर कि पेइंग योर यूटिलिटी बिल्स वॉज अ बिग टास्क. यू नीड टू टेक ऑफ, आप छुट्टी लें और जाके लाइन में लगें, और फिर वो बैंक 1 बजे बंद कर देता था और वो सारे मसले थे. बट नाउ यू कैन पे योर बिल्स ऑनलाइन. आज हमारे पास आई थिंक 16 मिलियन के करीब बैंक अकाउंट ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स, एंड दे आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ ऑलमोस्ट 30% a year. इंटरनेट बैंकिंग इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 25-26% a year. और जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं ऑन मोबाइल बैंकिंग, दे आर डबलिंग एवरी ईयर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट. दे आर डबलिंग एंड दे आर इंक्रीजिंग बाय 60% एवरी ईयर. तो इसका मतलब ये है कि द शिफ्ट हैज़ हैपेंड, एंड द शिफ्ट टू न्यू पेमेंट सिस्टम्स, टू न्यू पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ हैपेंड. और उसमें हमारी जो पॉपुलेशन की डेमोग्राफी है, अगर आप उसको भी देखें, तो हमारे पास एक बड़ी जो मेजॉरिटी है, वेरी यंग पीपल. और वो यंग पीपल, दे आर वेरी गुड एट यूजिंग टिकटॉक्स एंड यूट्यूब्स एंड फेसबुक्स एंड इंस्टाग्राम्स. I think the only thing that now remains is how to bring them to the financial system. आज भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग डरते हैं कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए, मुझे कोई गड़बड़ ना हो जाए मेरे साथ. मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त जो इकोसिस्टम की टर्म्स में, वी आर एट अ प्रिटी मेच्योर स्टेज. ऑफ कोर्स विद रास्ट कमिंग इन, next year we'll be launching the new RTGS system also. उसके अलावा मोबाइल बैंक्स, EMIs, PSPs, डिजिटल बैंक्स आ जाएंगे फुल फ्लेज. तो जो प्रोवाइडर्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो होगा, लेकिन हाउ कैन यू मेक द हॉर्स ड्रिंक द वाटर? यू कैन ब्रिंग द हॉर्स टू द वाटर, बट हाउ कैन यू मेक इट ड्रिंक? और ये है की चैलेंज हमारा कि हमारे नंबर्स, मैं आपको जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, आज रात पे हम P2P पे ऑलमोस्ट ऑन द एवरेज 1.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस अ डे करते हैं. ऑल्दो वी हैव मिस्ड आवर टारगेट विच वाज 2 मिलियन ट्रांजैक्शंस दैट वाज सपोज्ड टू बी अचीव्ड इन जनवरी, बट स्टिल देन अगर आप, और इस वक्त हमने कोई रात पे मोर देन 400 मिलियन ट्रांजैक्शंस की हैं सिंस इट्स लॉन्च, और और तकरीबन 8.4 ट्रिलियन रुपीस प्रोसेस हुए. इफ यू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन, द फर्स्ट ट्रिलियन रुपीस वर प्रोसेस्ड इन 322 days, एंड द 8th ट्रिलियन रुपी वर प्रोसेस्ड इन 33 days. So the adoption is also going up. What now needs to be done is to bring the people and make them, उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि टैक्स बचाने के चक्कर में ना रहो. ये एक बहुत शॉर्ट साइटेड चीज़ है. इसी तरीके से, और जो आज हम फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीक मना रहे हैं, ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है. ये हमारे बैंक्स के लिए भी है, ये हमारी फिनटेक्स के लिए भी है, ये हमारी PSPs के लिए भी है, कि जो DG साहब ने भी बात की कि व्हाट आर यू विलिंग टू गिव टू द पीपल. यहाँ तो ये मसला है कि अगर किसी के साथ डिजिटल फ्रॉड हो जाता है तो बेचारा या बेचारी तो लिटरली वो रुल जाते हैं, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलती. और तो हाउ आर वी विलिंग टू हैंड होल्ड देम? तो अब जो मिसिंग लिंक है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि जो मिसिंग लिंक है कि हाउ कैन वी गो आउट एंड हैंड होल्ड द पीपल आउट देयर, और दैट विल डिटर्मिन द फ्यूचर ऑफ डिजिटाइजेशन एंड डिजिटल पेमेंट्स इन पाकिस्तान. Definitely agree with you. And I think, Mr. Ahmed, you are a direct recipient to one of the innovative licenses that have come out of State Bank. But you've also picked up a very vulnerable community, जो farmers की, agriculture की है, जिसमें financial literacy भी कम है, जिसमें digital literacy भी कम है. How do you overcome those challenges, and what are the strategies that Digit Plus is adopting to make sure that as we go into this new era, we are creating more inclusive products? Thank you so much, Halima. So we are an agri-fintech and we've recently started. So हमने जब इसको envision किया तो हमने देखा कि काफ़ी आपकी learning के challenges यहाँ पर होंगे,
what we did was, and which has been very successful for us right now, is कि हमने पाकिस्तान की पहला मोबाइल वॉलेट बनाया जिसके जो मल्टीलिंगुअल है. हमारी जो ऐप है वो पश्तो में भी है, सराइकी में भी है, पंजाबी में भी है, उर्दू में भी है, और हम मज़ीद लैंग्वेजेस मंथली बेसिस के ऊपर ऐड कर रहे हैं. उसके ऊपर जो इम्पैक्ट ये हुआ कि विद इन द फर्स्ट 2 months ऑफ आवर कमर्शियल लॉन्च हमें अभी 40,000 हमने फार्मर्स ऑन बोर्ड किए हैं और 1.8 बिलियन की ट्रांजैक्शंस किए हैं. एंड आई कैन सी कि जो लैंग्वेजेस हैं थ्रू द एनालिटिक्स वो बहुत इफेक्टिवली यूज़ हो रही है. सेकेंड चीज़ जो हमने फिर फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए की, हमने ऑडियो असिस्टेंस दी एन ऐप. सो हर ट्रांजैक्शन के पीछे आपको ऑडियो बताती है इन अ वेरी लेमन टर्म्स कि आपने वो ट्रांजैक्शन किस तरह करनी है. उसके ऊपर हमें बहुत हेल्प मिली. थर्ड चीज़, जब हम फार्मर्स के अंदर गए तो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी का येस वी हैड एन इशू. तो हमने उनको यहाँ पे ये देखा कि फार्मर्स का सोर्स ऑफ इनकम एक ही है, या तो वो मिलर्स हैं, जिनर्स हैं, जो कि उसका प्रोड्यूस जो है वो ख़रीद रहे हैं. उन शेयर स्पेसेस के अंदर हमने सेशंस किए जहाँ हमने फाइनेंशियल अवेयरनेस भी फार्मर्स के अंदर की, बल्कि सिक्योरिटी अवेयरनेस भी की, बिकॉज वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर का. थर्ड, हम अब इकोसिस्टम डेवलप करें. इट्स अ न्यू मार्केट, इट्स अ डिफ़िकल्ट मार्केट टू कैप. इससे पहले पाकिस्तान में ज़्यादा इसके ऊपर काम भी नहीं हुआ डिजिटल मार्केट के ऊपर. तो हम पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं. वो इकोसिस्टम ऐसे है कि इनिशियली हम स्टार्ट करते थे फार्मर्स को ऑन बोर्ड करने से. अब हमने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की है. अब जो मिलर्स हैं या जिनर्स हैं उनका जो स्टाफ है हम उसको भी ऑन बोर्ड करते हैं, बिकॉज वो फिर ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं उस फार्मर्स के. जो दुकानदार हैं उस एरियाज़ के अंदर हम उनको भी ऑन बोर्ड करते हैं, बिकॉज उनका डेली इंटरेक्शन है विद द फार्मर्स, और वो भी एक किस्म के जो है ब्रांड एम्बेसडर्स उसके अंदर बनते हैं. अगली चीज़ जो हमने की दैट इज़ डिजिटल मीडिया, एंड दैट्स टिकटॉक. सो वी द ओनली वन दैट हैज़ डायरेक्टली इंटीग्रेटेड विद टिकटॉक इन पाकिस्तान. और अब हम वहाँ पे, और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ टिकटॉक की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है. तो अब हम वहाँ पे पूरी सीरीज़ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट वीडियोस की, जहाँ पे अवेयरनेस हम इम्पायर कर रहे हैं थ्रू फार्मर्स एंड रूरल कम्युनिटीज़ थ्रू टिकटॉक एंड अदर सोशल मीडियाज़ एज वेल. दैट्स व्हाट वी डूइंग. एंड देन वी हैव जो हमारा नेक्स्ट प्लान है दैट्स ऑल्सो गेमिफिकेशन. सो हम एक गेम लूडो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. आपको पता है लूडो इज़ समथिंग वेरी कॉमन, और फार्मर्स के अंदर हमने खुद देखा कि रात को जो है जो उनका लेजर टाइम है उसमें लूडो यूज़ होती है. तो हम लूडो लॉन्च कर रहे हैं जो कि विच हैज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस फीचर्स एज वेल. So these are few features that we've taken up जिसके लिए हम फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्पायर कर रहे हैं. I have a interesting insight on that कि औरतें जो कैंडी क्रश खेलती हैं, एटलीस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे जो कैंडी क्रश खेलती हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस सबसे हाई होती है, बिकॉज वो हर वक्त अपनी बेहतरी के लिए एक तो गेम भी खेल रही हैं बट वो अपनी बेहतरी के लिए सोचती हैं. So we have seen कि उनकी credit worthiness is very high, and I think using games within vulnerable communities can help us figure out कि किस तरीके से आप बेहतर financial services और literacy भी provide कर सकते हैं. Abrar sir, going on to you, आपके experience में in banking industry in general and HBL specifically, adapting its strategies and services to align with the demands and opportunities of digital financial inclusion. How are you thinking about it? How is the bank thinking about it? And you've been at the forefront of innovation as a bank as well. With newer fintechs coming, how are you thinking in terms of creating that inclusive ecosystem as well? We can't hear Brasa. We can't hear you, Brasa. Any Yes. better? I Yes. can hear you all fine. Yes, we can hear you now. Okay, thank you. So first of all, my apologies for not being there in person. Our CEO was supposed to be there and he had to go somewhere, so I had to step in at the last minute. So to answer your question, Halima, I think as
the Deputy Governor also mentioned, and as Suhail Jawad Sahab also just alluded to, some of the things that have happened over the last decade are about where the regulator has played a huge role in terms of putting out enabling regulatory environments to go out and support and kind of put the digital financial inclusion on a fast track. And those regulations have evolved as the technologies that were coming into the country, that those technologies evolved, those regulations have evolved as well. Now, while that has happened, I think उस पिछले एक decade में through various branchless banking initiatives and the mobile apps की usage, masses के अंदर an acceptance for digital financial services बढ़ गया है. That confidence on the formal financial system among the previously unbanked segment, that has increased. उन्होंने basic अपनी needs, fund transfer, bill payment वगैरह करके देखा, repeatedly करके देखा, तो their confidence level has increased, infrastructure has increased. But now the real challenge comes in terms of coming out and rolling out a true and more innovative, more interesting products and services that now translate into a more utility for the targeted segments. And as mentioned earlier as well, the unbanked or thinly banked population are probably one of the most vulnerable segments of the society, as are the micro and the SMEs. They are the most vulnerable segments of the society. So I think for us, the challenge now remains, how do we go out and start leveraging the technology, start leveraging the enabling regulatory environment to build on the successes so far, build on the foundations that have been laid so far, to now roll out new products, new services, and how to think about those products differently. एक cash flow की बात हुई, other than collateral, climate change एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट है जो कि अब वो लोगों की और ख़ास तौर पे इस वल्नरेबल सेगमेंट की लाइफ में लेके आता है. सो अगर आप सोचें तो एज अ फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर we don't have the mechanisms to kind of go out and finance somebody who wants to build a wall to protect themselves against flooding, at least low-level flooding, because uski koi ROI nahi hai. So how does one think about going out and offering credit facilities or other products or services to those kinds of segments and enable them? I think that's going to be a collective challenge for us, not just for HBL, but for us as an industry. And that's where us and the regulators will need to think together about coming up with new kinds of products and services which go outside the realm of the conventional suite of products and services which have been designed and used for decades and centuries. Thank you. Thank you, Abrar Sahab. I think you brought on some very important point around climate. And Ms. Aban, I want to ask you this question. Climate is now becoming a very central part of any discussion, right? Especially on the economic futures of every country at this point. And even though we are not direct contributors to the climate change, but unfortunately recipient के side पे बैठे हुए. So is there a role for digital financial services in mitigating climate risks and contributing to a greener, sustainable economy? Thank you, Halima. I'm glad this came up because it allows me to touch on 2 points. The first is the fact that central banks or financial sector regulators की jobs मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं. I think especially developing and emerging economies में जहाँ institutions इतने diverse नहीं होते कि you can have different regulators, set up different entities. So economic and financial policy making for a country, usme central banks are basically the key players with 1 or 2 other entities in most of these countries.
और इस वक्त जो इकोनॉमीज़ हैं दे आर कन्फ्रंटिव बाय मैसिव चैलेंजेस इसको हम यू मे इवन हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड पॉली क्राइसिस इंटरलिंक क्राइसिस एक तरफ लाइक यू राइटली मेंशन क्लाइमेट क्राइसिस है और उसमें इट्स प्रिटी क्लियर कि ना कोई एक इदारा ना कोई एक मुल्क इसको सॉल्व कर सकता है एंड इट्स राइट एट आवर डोर उसके अलावा और बहुत सारे challenges हैं conflict disrupting supply chains inflationary pressures unstable global markets so I think the role of central banks has become critical and very very difficult and coming to the specific climate change इसमें भी Sohail साहब talked about कि अगर आप 10 साल पहले देखें डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम आप 10 साल पहले सेंट्रल बैंक्स का रोल ही देख लें या नैरेटिव देख लें उसमें कौन क्लाइमेट चेंज की बात करता था बट नाउ इट्स एवरीवेयर एंड इट्स प्रिटी क्लियर वेदर इट्स एडवांस्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज देर आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स स्पेशली रेगुलेटर्स एंड सेंट्रल बैंक्स टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन हियर और आफी नेटवर्क में इनफैक्ट दिस हैज़ बिकम द a very very rapidly rising policy area of interest. In fact, digital financial services के बाद number 2 पे अब inclusive green finance है. Meaning कि ठीक है green finance तो हमने देखना ही है, but it also needs to be inclusive. So you can't just look at greening the financial sector, greening financial sector policies with consciously also looking at it from an inclusion lens. So I think that's where the intersect between digital financial services and green finance especially comes in. And for developing economies, जैसे आपने कहा, unfortunately we are on the receiving end of climate change with being the least contributors but being the most vulnerable. और उसके अंदर भी जो सबसे आपके vulnerable segments हैं, they are at the greatest risk. So agriculture की बात हुई. So the agriculture sector is very very vulnerable. Similarly, आपके जो people living in for example, in Pakistan, mountainous areas are quite vulnerable. Pakistan, in fact, I think is the 8th or something like that most vulnerable to climate change country in the world. So isme I think when we look at the experience of the AFI network, so there are at least 2 or 3 critical contributions that inclusive green finance and policies for that can play. One is as safety nets. So digital financial services, I think COVID ने और कुछ किया हो या ना किया हो, ये तो साबित कर दिया कि आपको access to financial services is going to be through digital and it's really critical अगर आपने उन segments को reach करना है जो किसी भी crisis से affected है in a safe, immediate and relevant way. Same applies to climate. How do governments get social payments out to people who are, for example, affected by floods? और फॉर एग्ज़ाम्पल एनी अदर नेचुरल डिज़ास्टर. सो हमने ये अपने नेटवर्क में देखा है जब कहीं पे हरिकेन आता है या फ्लड्स आते हैं या टाइफून आता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंट्रीज़ फीजी है बहामाज है एट्सेट्रा. डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड हैविंग एक्सेस टू दोज नॉट जस्ट हैविंग एक्सेस टू द वॉलेट बट देन बीइंग एबल टू यूज़ दैट मनी विद इन दैट इकोसिस्टम becomes a really critical factor in building the resilience of those communities. So this is one. The other is also the P2P payments. आप सोचें कि एक कम्युनिटी है अगर इट इज़ अफेक्टेड बाय अ नेचुरल डिज़ास्टर तो उनकी जो भी सोशल नेटवर्क्स हैं विद इन द सेम एरिया आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द सेम डिज़ास्टर. सो देम बीइंग एबल टू कम इन विद सम इमरजेंसी हेल्प और सपोर्ट फॉर फैमिली मेम्बर्स बिकम्स वेरी चैलेंजिंग. सो फॉर them to be able to access support networks outside that location, for example across the country or in other cities or locations, again digital financial services is really important. So the P2P and the G2P aspect, I think from a social safety net perspective related to green finance is very critical. And the other I think important जो इसका aspect है which I think Abrar साहब touched upon is enabling these vulnerable segments to adapt to climate change. क्या हम उनको for example अगर farmer है या कोई small business है, rising energy bills हैं, जो भी है, उसको क्या हम financing provide कर सकते हैं which can enable them to transition from one type of
technology to another, solar लगा रहे हैं या different production process करना है या agriculture में आपने you have to mitigate the effect. तो I think the other key role of digital financial services is making sure that the right products and services are available to these segments to enable that transition for climate adaptation. I think these are especially two critical areas. Can you guys hear me? I think the work that Digit Plus is doing in terms of taking a very vulnerable community and creating use cases around them. What insights have you gained as you promote financial services and also push for literacy within these communities? So, Halima, you see, हमने अभी तक, it's been 2 months, हमने 40,000 wallets onboard किए. But onboarding these accounts is not enough. Yeah, onboarding these accounts, मैंने को बताया था कि हमने 40,000 wallets 2 महीने में भी farmers के onboard किए, लेकिन onboarding is not enough. It's not a big thing कि आपने जो है account खुलवा लिया. आपने पूरा ecosystem बनाना है. जैसे अभी आपने भी थोड़ा सा पहले बोला कि हमने मज़ीद उसको, तो हम अब इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं. इकोसिस्टम कैसा है कि हमने 10-15 साल के अंदर हम बहुत सारे वन लिंक बिलर्स देखते हैं और आजकल के इलेक्ट्रिक हो या लाहौर की इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स हो बहुत इंक्रीज़ हो रही हैं. हमने ट्यूबवेल की पेमेंट्स डिजिटाइज़ की हैं अब, और जो ट्यूबवेल की पेमेंट्स हैं फर्स्ट डे के अंदर, ये लास्ट वीक हमने किया, फर्स्ट डे के अंदर हमने 1.7 मिलियन की ट्रांजैक्शंस क्लॉक कर ली. दिस इज़ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. सेकंड, हमने उसके बाद हमने ये देखा कि हम मज़ीद कैसे फार्मर के लाइफस्टाइल के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं. सो जो सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम हमने फार्मर्स की देखी वो इनपुट्स की है. पेस्टिसाइड्स हैं आपके पास और बहुत सारी डैप्स हैं, बहुत सारी इनपुट्स हैं, इसकी अवेलेबिलिटी का इशू है, इसकी पेमेंट्स का भी इशू है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा काउंटरफीट होते हैं मार्केट में या शॉर्ट होते हैं. अब हमने पार्टनर की है विद अ लॉट ऑफ एग्री मॉल कंपनीज और हमने डिजिटाइज किए हैं उसकी पेमेंट्स. हमने इंश्योर किया है थ्रू दीज एग्री मॉल कंपनीज के द राइट प्रोडक्ट टू द कस्टमर मिले. थर्ड चीज़ जो फिर अब हम इसके अंदर अब हम कर रहे हैं वो ये है कि नहरें होती हैं, केनाल्स होती हैं फार्मर्स की, इन केनाल्स की पेमेंट्स अब हम डिजिटाइज कर रहे हैं. This is all new value that we're creating. उसके बाद अब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं सोलर्स के अंदर. सो जितने भी रूरल एरियाज़ हैं और फार्मर एरिया हैं, इनकी बहुत ज़्यादा रिलायंस है सोलर्स के ऊपर. तो सोलर्स की अवेलेबिलिटी और थ्रू पार्टनर्स और उसके बाद उसकी पेमेंट्स की डिजिटाइजेशन जो है हम कर रहे हैं. सो सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि वी हैव टू डेवलप एन इकोसिस्टम अराउंड इट, ताकि हम फार्मर्स की लाइफस्टाइल के अंदर पेनिट्रेट करें. और जब वो होगा तो फिर हम खाली एक अकाउंट नहीं होंगे, फिर हम उसको एक्सटेंड करेंगे, उसको 30 डे एक्टिव भी करेंगे, उसको 15 डे एक्टिव भी करेंगे, और फिर यहाँ से आगे फिर जब आप डेटा एक्यूमुलेट करेंगे तो फिर सेविंग्स भी होगी और लेंडिंग भी होगी. प्लस हम पैरामीट्रिक इंश्योरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं विद अ फ्यू कंपनीज. पैरामीट्रिक इंश्योरेंस में होता ये है कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए तो उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर जो है क्लेम मिलती है फार्मर्स को. तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी डूइंग फॉर द इकोसिस्टम, और ये अब इम्पैक्ट करेगा. सो और एक लास्ट लर्निंग ये है कि दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस, बिकॉज हम एग्जैक्ट न्यू मार्केट डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक नई सर्विसेज के अंदर जा रहे हैं. सो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, बट देयर इज़ इमेंस पोटेंशियल टू इट. ऑल्सो हम अभी जो प्रोडक्ट्स बनाते थे पाकिस्तान में वो वन साइज फिट्स ऑल थी, हम एक चीज़ सबको बेचते थे. बट आई थिंक दैट हैज़ नाउ मूव्ड. अब हमें स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनानी पड़ेंगी. जितनी हम चीज़ें आपको बता रहे हैं ये सारी फार्मर की प्रोडक्ट्स बन रही हैं. इसी तरीके से एग्री के अंदर बहुत सारा एरिया विमेन का भी है. अब हम विमेन की प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं, हम उनकी स्कोपिंग कर रहे हैं और उनको डेवलप कर रहे हैं. और इसी तरीके से फिर SME एक मार्केट है, और मार्केट से हमें स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनानी पड़ेंगी ताकि हम ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज़ करें पाकिस्तान में. So Iljawad साहब, how do you see रास्त transforming, जो जिस तरीके से नए नए use cases आ रहे हैं, how would you see that रास्त transforms the digital payment landscape within Pakistan, and what are the future offerings of Rast, and what are the value addition it has brought to the financial services industry?
Thank you. So my favorite question, and I think the 5-10 मिनट काफ़ी नहीं रहेंगे, बट अगर आप किसी भी कंट्री की डिजिटल जर्नी को देखें तो देयर इज़ ए स्टैक अप्रोच. स्टैक की सबसे ऊपर की जो लेयर है वो ये है मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है ना, और उसके साथ कनेक्टिविटी और कितनी रोबस्ट है और ये सारा. द सेकेंड लेयर इज़ पेमेंट्स, और एंड आई एम सेइंग दिस फॉर एवरीवन, स्पेशली द बैंक्स, कि पेमेंट्स इज द एबिलिटी ऑफ बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स, कस्टमर्स टू रैपिडली मूव देयर मनी. तो अब जितना अच्छा पेमेंट सिस्टम आपका होगा उसकी कैपेबिलिटी उसका सिर्फ एक ही है कि उसमें इंस्टेंट पेमेंट्स होनी चाहिए, और उसमें ये चीज़ अब जो है फिजिबल नहीं है कि आप किसी का पैसा रोकें. तो बैंक्स के लिए भी समझने की ज़रूरत है कि फ्लोट का मॉडल और पुराना मॉडल जिसमें 3-3 दिन 4-4 दिन आप पैसे रोकते थे, शायद वो ख़त्म हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स द अदर टू लेयर्स, वन इज़ डेटा, और वो भी मैं बताता हूँ किस तरह कनेक्टेड है. डेटा पे आई थिंक वी आर वे बिहाइंड इन द वर्ल्ड, और उस पर कुछ हमारे यहाँ इतना कोई ख़ास काम भी नहीं हो रहा, और उस डेटा में ऑफ कोर्स उसकी स्टोरेज, उसकी यूसेज सब कुछ आ जाता है. एंड द फोर्थ इज़ न्यू टेक, कि नई टेक्नोलॉजीज़ को कैसे हम अडॉप्ट करते हैं और किस तरह से उसको आगे लेकर जाते हैं. तो ये स्टैक है हमारा. अब पेमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स रास्ट इज बिल्ट ऑन अ स्टैंडर्ड विच इज कॉल्ड ISO 20 और 222 भी लोग कहते हैं. नाउ दिस इज अगेन अ डेटा रिच स्टैंडर्ड, विच मीन्स कि पेमेंट सिर्फ अब डेबिट क्रेडिट नहीं है, उसके साथ पूरा कॉन्टेक्स्ट ट्रैवल करना चाहिए, उसके साथ बिल्स भी ट्रैवल हों, उसके साथ इन्वॉइसेस भी ट्रैवल हों, टू द एक्सटेंट कि अगर कोई आर्टिस्ट कोई आर्ट वर्क करती है तो वो भी ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है ना. दैट्स द आइडिया ऑफ ISO 2022. इट्स गॉट रिच APIs. इस वक्त हमने रास की डिप्लॉयमेंट में आई थिंक कोई 125 APIs एक्सपोज की हैं टू बैंक्स. इट्स अ बिग नंबर मेरे ख्याल में. और इस वक्त मैंने आपको बताया कि हम डेली 1.5 मिलियन जो ट्रांजेक्शन्स आती हैं, API कॉल्स 4 मिलियन है. एंड वी वर सॉर्ट ऑफ कि यार ये 1.5 तो हैं, लेकिन ये बाकी 2.5 कहाँ जा रही हैं. तो इट टर्न्ड आउट कि बैंक्स are actually using RAS for data interchange and validations of the other transactions also that are not related to RAS. तो अगर आपने किसी अकाउंट का टाइटल चेक करना है, अगर आपने किसी की कोई और देखना है कि इस पे पोस्टिंग रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई, they can do it. And in fact, businesses can use this functionality when they send their bulk payments to RAS. तो वो ये देख सकते हैं कि बिफोर पोस्टिंग कुछ अकाउंट पे कोई मसला तो नहीं है. ब्रांचलेस बैंकिंग में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आता है कि वहाँ लिमिट्स होती हैं अकाउंट्स की. तो नाउ यू हैव अ फंक्शनैलिटी वेयर बाय बिफोर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन यू कैन एक्चुअली चेक द लिमिट ऑफ दैट अकाउंट एंड देन सेंड इट फॉर पोस्टिंग. ठीक है, तो गवर्नमेंट के अंदर और बल्क के अंदर ये एक बड़ी फैसिलिटी. तो ISO 20 और 22 ऑन विच रास्ट इज बिल्ड, इट्स द फ्यूचर ऑफ पेमेंट्स. और इसीलिए हम अपना RTGS भी जो नया ला रहे हैं वो भी ISO पे ही लेके जा रहे हैं 20 और 22 पे. लेकिन उसके लिए बैंक्स को और सब जो एंटिटीज उसकी पार्टिसिपेंट्स बनेंगी, दे विल हैव टू ऑफ कोर्स इन्हांस एंड अपग्रेड देयर टेक्निकल कैपेबिलिटी जो वो करें. तीसरा, रास के साथ हमने एक काम ये किया है स्पेशली फॉर मर्चेंट्स. अभी आपने वो पिक्चर दिखाई QR की. पाकिस्तान में अब हमारा अपना यूनिफाइड QR स्टैंडर्ड है, एंड दैट स्टैंडर्ड इज फॉर P2P एंड इट्स फॉर P2M, मर्चेंट के लिए भी है. P2P पे 25 बैंकों की ऐप्स हैं जो इस वक्त रेडी हैं. आप में से अक्सर के पास वो ऐप्स होंगी. अगर आप उसको खोलेंगे और अपने अकाउंट बैलेंस पर टैप करेंगे या सामने ऐप अपनी उसको करेंगे तो आपको अपना पर्सनलाइज QR नजर आएगा, एंड यू कैन शो दैट QR टू एनी अदर पर्सन जो उन 25 बैंक्स में, और वो स्कैन करके दे इमीडिएटली ट्रांसफर फंड्स. और उसको हम अब जब मर्चेंट के ऊपर लेकर आ रहे हैं तो मर्चेंट पे जाहिर है उसकी कुछ एडिशनल फील्ड्स भी होती हैं एक्वायर्स की, दे कैन डू दैट. But P2P QR is I think it's live to a larger extent in Pakistan. It's the only thing is कि आप उसको यूज कैसे करते. फिर जिनके पास ऐप नहीं है उनके लिए टिल कोड का ऑप्शन है. तो इट्स लाइक अ 10-12 डिजिट नंबर जो आप डिस्प्ले कर दें और वो आप यूज करें, उससे पे कर दें. वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट्स यूजिंग मर्चेंट एलियस. तो अगर एक दुकानदार है वो अपनी दुकान के नाम पे बैंक से एक एलियस रजिस्टर करवा लेता है, दैट्स जस्ट अ नंबर. मैं उसको आई लव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ हैशटैग. तो वो एक तरह का हैशटैग है और वो यू कैन डिस्प्ले इट एंड यू कैन एक्सेप्ट पेमेंट्स. फिर रास में
जो फिनटेक्स के लिए वो रिक्वेस्ट टू पे और PISP मॉडल है, विच मीन्स कि एनी मर्चेंट, एनी बिजनेस कैन एक्चुअली सेंड अ रिक्वेस्ट टू पे। अगर आप पेमेंट्स की टर्म्स में सोचें तो इधर पेमेंट्स बल्क होती हैं या P2P होती है या रिक्वेस्ट टू पे है। अगर आपके बच्चे की फ़ी का चलान आया तो वो भी एक रिक्वेस्ट टू पे है, अगर एक टैक्स का चलान आया तो वो भी रिक्वेस्ट टू पे, सारे बिल्स रिक्वेस्ट टू पे हैं। नाउ राज गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू सेंड रिक्वेस्ट टू पे एंड द कस्टमर कैन चूज टू पे नाउ और दे कैन पे लेटर। अगर कोई बिल है जिसकी 30 डेज की वैलिडिटी है तो दैट बिकम्स अ पे लेटर फॉर, दैट्स ऑल्सो बिल्ट इन राज। फाइनली जो मॉडल जिस पे हम सबसे ज़्यादा इस वक्त कोशिश कर रहे हैं और जिस पे बैंक्स खुश नहीं है हमसे, वो है PISP मॉडल, विच इज़ पेमेंट इनिशिएशन सर्विस मॉडल, जिसका मतलब है कि थर्ड पार्टीज शुड बी एबल टू रिक्वेस्ट पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। सो यू आर अ फिनटेक और आपके कस्टमर ने आपको ऑथराइज किया हुआ है कि आप किसी भी पेमेंट पे उसको आपके बैंक को, कस्टमर के बैंक को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और रिक्वेस्ट कस्टमर का बैंक कह सकता है येस यू पे और यू डोंट पे। वहाँ पर अमाउंट्स भी कस्टमर बता सकता है, वहाँ पर उसकी वैलिडिटी भी बता सकता है, और ये पूरा, इसके लिए पूरा एक जो मॉड्यूल रास में बना है उसको हम कस्टमर कॉन्सेंट मैनेजमेंट कहते हैं, कि कस्टमर अपनी कॉन्सेंट कैसे रजिस्टर कराता और यूज़ करता है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये अब किसी भी मॉडर्न पेमेंट सिस्टम्स के लिए, और जहाँ तक हम देख रहे हैं फ्रॉम स्टेट बैंक ऑल्सो, और मेरी अक्सर रेगुलेटर्स से भी अराउंड द वर्ल्ड बात होती है, तो सारे अब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट्स समथिंग विच इज़ वेरी न्यू, इट्स लाइक कोई 1 साल पहले किया है, किसी ने 2 साल पहले किया है, लेकिन दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू डिटर्मिन द फ्यूचर ऑफ पेमेंट्स इन पाकिस्तान। और वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह अगले 1-2 साल में हम देखेंगे कि जैसे जैसे एंटिटीज़ इसको एडॉप्ट करती जाएंगी, ये जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये रैपिडली इसमें इजाफा होगा। Absolutely, and I'll share another insight from our customer base. हमने एक छोटा सा पायलट रन करा था जहाँ हम we were trying to figure out the use case हमारे मॉडल के हिसाब से for request to pay optionality. One of the things that came out for women, सब भूल जाती हैं पेमेंट्स करना, जबकि अगर उनके पास एक्सेस भी है वो भूल जाएंगे उनकी मंथली पेमेंट्स या कॉन्ट्रीब्यूशंस करना। एंड दिस दे गॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट कि अगर हमें कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स इस तरह से आते रहें और ऐसे में हमें येस और नो ही करना है, विच विल अलाउ अस टू ग्रो आवर सेविंग्स, which can then also lead to a lot of different kinds of business models within Pakistan as well. जो round of savings वाले models होते हैं जो auto deduct हो जाएं और फिर आप अपने pools pots बनाते रहें. And India has done really great job in pushing for that kind of a behavior. So I think this will bring in जो आपके बिल्कुल ही vulnerable, completely forgotten audiences हैं, उनको आप सिस्टम में लेकर आएंगे, उनके लिए ईज पैदा करेंगे और हमारी जॉब फिर कस्टमर एक्सपीरियंस की बन जाएगी. एक बात, एक हमारा आपने स्लोगन सुना होगा रास्त का, फौरी फ्री आसान. रास्त इज नॉट ओनली फ्री फॉर कस्टमर्स, इट्स फ्री फॉर बैंक्स, इट्स फ्री फॉर एवरीवन. जब आप कोई पेमेंट स्कीम पे जाते हैं तो यू पे ह्यूज मनी टू देम, हर ट्रांजैक्शन भी यू एंड अप पेइंग मनी टू देम, बट रास्त इज फ्री. तो चूंकि लिटरेसी का वीक है और मैं लिटरेसी के लिए बैंकों को ज्यादा टारगेट करता हूँ, तो उनके लिए मैसेज है कि रास्त इज फ्री फॉर यू एज वेल. या एंड इवन छोटी छोटी आपकी फीस जो होती है वो आपके कस्टमर को खटकती है, बिकॉज इवन 100 रुपीज़ कैन बी अ वेरी लार्ज अमाउंट for an audience that might not be very financially well to do. So I think this, I'm very excited about it. I know that our audience base, the customer that we cater to, is super excited about what we can build on it. And I think collectively as an industry, we can create a very large impact because of Rast. Moving on to you, Mr. Abrar Saab. We've been hearing a lot about HBL Zarai services. Can you briefly tell us a little bit about what it is and its plan to enhance financial inclusion amongst farmers? What criteria will be used to evaluate the effectiveness of those efforts? Gee, thank you very much, Halima. So first of all, before I talk about Zarai, I think what just Sohail Jawad just talked about Rast. I personally am a firm believer with the Rast P2M. I think that would truly be a game changer. I genuinely believe that I think we are at an inflection point where with the Rast P2M QR, now we can hope for a really scaled up
digital payment acceptance across the bulk of our retail universe. So I think that we are at a very, very exciting stage around that. And hats off to Sohail Saab and his team for continuing to persist with this. On Zerai, uh, again, as a bank, we continue to believe that it's not just about putting out infrastructure and products. It's about finding the right utility of what you have, creating a real difference in the lives of the most vulnerable segments, because that's where the real value comes in. And on this, again, we are grateful to State Bank for allowing us to go out and experiment with this completely new idea in this market, to set up a 100% owned subsidiary. So it was a lot of back and forth, but the regulators spent a lot of time trying to understand our model, our goals and objectives, and finally allowed us to go ahead with it. The foundation of this concept was laid through some of the pilots that we have been running over the last few years. What the concept originally started was that the small farmers, they do not have the ability to buy high quality inputs. And that's where the whole problem starts. So they buy inferior quality, they buy fake products that impacts their yield, that impacts the soil in itself, that impacts the further productivity of the soil on an ongoing basis. Then the farmer struggles with the selling of the product, the middleman, the price, getting the right price and all of that. So it's a vicious circle that the small and the mid-sized farmers continue to suffer through. So we ran few pilots where we worked with our large corporate customers who are the end buyers of these farm products, and we connected those farmers with the end buyers, and we had them agree before this first seed was sown on a price at which the product will be bought from the farmer. So now the farmer was completely free of the worry of selling the product. Then we financed the inputs for the farmer. So the farmer did not have to worry about the right kind of liquidity to be available to them to buy high quality inputs. We financed those and we said we will settle those from your final payments, because payments are going to come from our corporate clients. So that way the farmer was able to start the journey with a high quality input. Then we provided the services of agronomists who were there advising at every stage of the crop cycle on what needs to be done. They were also advising on the most economical use of the water as well, so that the water could be used in the most efficient manner. Then we also helped them go out and get mechanized services without having to worry about being how to be able to afford it upfront, so that they could go out and use the most modern technology to get the right kind of value out of their fields. So we're going through multiple projects, cycles of various crops. What we saw was that the farmer yields increased in high double digits, and hence the money that was coming into farmers' pocket increased significantly. We had independent valuation done by Princeton University who revalidated those ideas and those numbers. So that laid the foundation. So now with Zerai, what we intend to do is, and we recently established our first dera in Burewala, where we will have our own mechanized equipment that company will buy. We'll have our agronomists, we'll provide financing for the high quality inputs, we'll provide those inputs at a controlled price, right at the doorstep of the farmer, because typically as the need for the right product comes in, the farmer would also see that in the market there would be an additional premium that the distributors would start to charge over and above the control price, making it more difficult for the farmers to afford it. So we'll make sure right products are available literally at their doorsteps. We'll make sure we
enable them through our Connect platform to open accounts so that they can do financial services and make digital payments. We'll work with them to get the right inputs without having to worry about selling the product. They'll know that they'll have a predetermined price of their output, that they will know day one that this is what the product will be sold at. We'll help them take care of the waste of the crops itself as well. So it will be an integrated service provision. The idea remains that we work with the farmers to significantly increase the yield of the crops. And to give you a context, last year for Pakistan, the current account deficit was about $2.2 billion. We had imported edible oils and crops and other food items for about $6 or $7 billion. Now, if we were not to import those food-related items, if we were self-sufficient, we would actually be surplus in current account. Forget about us exporting the agri output because of the higher yields. So that's the kind of significant impact we believe this initiative will have, and we are very excited about it. And we again are grateful to State Bank for continuing to partner with us and for allowing us to go out and experiment with this new model. Thank you, Abrar Saab. On that note, we would like to get some closing remarks from all my panelists today. Just looking forward, Abrar Saab, what are the top 3 trends that you see are going to be extremely important in digital financial services? I think to begin with, the first would be what Sohail Jawad Saab said, RAS, and that's going to be a game changer. It's going to be about how different businesses and different players in the market, they look at becoming more creative in terms of leveraging the power that becomes available to them. That will drive massive competition across all sorts of players. And it will kind of democratize the product offering capabilities. And I think that's going to be a very, very exciting stuff over the next couple of years. The second major thing that I see is happening, and we already started to see happening, is that our various regulators are going to start to work together, as we saw with some of those unscrupulous lending applications. So there are going to be different products and services because of technology that may come out, which may not be directly regulated by any specific regulators. But then our regulators will have to work together by those issues to go out and figure out a way of addressing those challenges so that the consumer confidence does not get shaken and the legitimate players are able to continue to build and scale new and interesting products and services. So I think these are the two real exciting things that we need to look out for. We need to see how these evolve, and these are going to be the real game changers over the next 5 to 7 years. Great, thank you so much. What about you, Ms. Aban? Any thoughts on this? What are the trends that you are seeing and excited about? Yeah, I think as far as digital financial services landscape at the policy makers level is concerned, I think from our network, what we continue to see is the excitement around innovation. So how can regulators and policymakers continue to support innovation, because that obviously is what will drive the market forward. It is really critical for the financial inclusion agenda. In fact, some research is also showing now there's quite a clear contribution of financial innovation to economic growth. So all of those, I think for the policy goals, means that we need to continue to strengthen competition in the market, allow new business models, new products, services, invest in the technologies that are needed to enable that innovation. Policymakers are working on solutions like sandboxes, innovation hubs. So I think that will continue. But there is also a big but with that. But what is keeping policymakers awake and will continue to keep them awake at night is the risks that are also coming with the innovation. And I think, these risks are
in terms of data privacy, data security, which has, can have different implications in different countries, fraud prevention, making technologies robust, because that has direct implications with the confidence of the users in the financial system, which we are working so hard to build, and a one bad experience can lead to issues around that. Also making sure, somebody mentioned fraudulent practices, making sure the players in the market are, doing what they're supposed to. The risks, I think, are tremendous. And so I think a big part of what we are seeing is how do we balance the risks with the opportunities. So we continue to innovate, but at the same time make sure that inclusion comes with safety. And I think financial literacy, market conduct initiatives are becoming very, very big amongst our member institutions, and we see this is one of the top areas that they're investing in. And I think the third area is that policymakers are also investing or need to invest in themselves to make sure that they keep up with the market development, and that they, the central banks and policymakers themselves are equipped to deal and regulate the initiatives that we are seeing. So I think those are kind of the three broad trends that we are seeing across our members. Great, thank you so much. What about you, Ahmed Saab? So the first will be Rust for sure. Second will be an open API framework, because that will allow non-regulated institutes to open a bank account and will be managed by a regulated institute. And we'll have a lot of data coming up. So I think artificial intelligence and machine learning for fraud detection will be the third major trend for this. Great, thank you. Sohail Jawad Saab. जी थैंक यू आई थिंक अभी तक हमने एज ए इंडस्ट्री फाइनेंशियल इंक्लूजन का फाइनेंशियल मॉडल नहीं क्रैक किया है और पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हम सब की चाहत है, हम सब कहते तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे सेक्टर ने अभी तक इसकी फाइनेंसेस को क्रैक नहीं किया है। तो अब हो क्या रहा है? अभी रास की हमने बात की, लेकिन रास के आने से जैसे मैंने कहा होगा क्या कि द एबिलिटी टू होल्ड मनी फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू गो डाउन बिकॉज पीपल वांट टू मूव मनी क्विकली। वहाँ पर जो आपका फ्लोट बेस्ड इनकम थी दैट विल बी मूव्ड टूवर्ड्स अ फी बेस्ड इनकम। अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है बिकॉज ऑफ हाई पॉवर्टी वो लो मार्जिन्स की इकोनॉमी है और इसीलिए कोई स्ट्रेस आता है तो हमारी स्टार्टअप सबसे पहले जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत होगी हमारे बिजनेसेस को और ख़ास तौर पे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को और हमारे बैंक्स और पीएसपीज और सबको कि किस तरीके से दे कैन एक्चुअली मेक अ लिटिल बिट ऑफ मनी और एट द सेम टाइम वो सर्विसेज प्रोवाइड करें कस्टमर्स को। तो पहला तो ये है कि हाउ विल द फाइनेंशियल मॉडल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन हाउ विल इट बी इट विल टर्न आउट। दूसरी है डेटा, और जैसे मैंने कहा कि डेटा पे हम बहुत पीछे हैं और ये बात अब समझने की ज़रूरत है कि द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम इज एक्चुअली इन डेटा, कि आप डेटा को कैसे कोलैबोरेटिवली यूज़ करते हैं। उसमें ओपन बैंकिंग है, उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें, बट हाउ डू यू यूज़ डेटा टू आइडेंटिफाई व्हाट द कस्टमर वांट्स एंड टू देन कम अप विद सॉल्यूशंस दैट cater to the needs of those customers। तो उस डेटा को फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है और डेटा के लिए कोलैबोरेशन और साइलोस को ब्रेक करना और रिपोजिटरीज को बिल्ड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली आई थिंक जो आपने भी बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई और जो न्यू टेक आ रहा है उसको कैसे अडॉप्ट करें, और वहाँ पर स्टेट बैंक को भी सैंड बॉक्सेस बनाने चाहिए और वो सैंड बॉक्सेस सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक ना हो बल्कि उसका ऑब्जेक्टिव हो कि हम कैसे उन न्यू टेक्नोलॉजीज़ को कस्टमर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इफेक्टिव सुपरविजन के लिए, ओवरसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ चूँकि न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ जब डेटा और फिर पेमेंट्स की हम मिला के बात करें तो वहाँ पिक्चर हमें नज़र आती है क्लियर। आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ गोइंग टू बी डिफाइनिंग the future of digital payments in Pakistan. Absolutely. I think what you said something which was very interesting. Costs, how do we understand the cost structures of financial inclusion and how do we collaboratively work
together as an industry to bring down those cost structures so that business models start making sense across board. और नए नए जितने business models आते जा रहे हैं उसमें जो सबसे पहले question पूछा जाता है कि आप पैसे कैसे बनाएंगे, because you are operating with such low margins. The best way forward would be to just work together as an industry to bring those costs down and to also bring the risks down. आपने जो बात करी, जो risk management and fraud management is becoming very, very important with innovative technologies that are coming in. The more we work together as an industry, the better it is for the financial inclusion space in Pakistan. I would like to thank you all for taking our time to have this conversation. It was extremely insightful. I found it very insightful. I hope you all found it very insightful. We are open to take questions now. Yes, please go ahead. Thank you very much. Thank you very much. Two quick questions. The first one is that this was a very good session, but this is a very unusual day that since morning we have not heard a word Islamic banking throughout this discussion. I'm linking that because of what Salimullah Sahab has mentioned. You see the ultimate objective of prosperity where the Islamic banking can play a role. So that's how you see one point. There's no question on that. But the question is, and I'm addressing to Salimi Sahab and Ibrar Sahab, Sohail Jawad Sahab ne jawab nahi dena is pe. When we look at era 1.0 and era 2.0, era 1.0 was primarily steered by the regulator, by the central bank. Do you think that era 2.0 should be steered by the private sector? Thank you. Definitely. Sir, I was part of the era 1.0 or I think I was also... I was part of the era 1.0. I was one of the team members that has launched Pakistan's first mobile wallet. So मैंने वो देखा है सारा जो change structure अभी आया है. अब आप देखेंगे तो उस ज़माने में अगर लिमिट चेंज होती थी तो एक फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट जाता था और ब्रांच के अंदर या एजेंट नेटवर्क के अंदर और फिर 2-3-4 दिन के अंदर वो लिमिट चेंज होती थी. अब वी हैव डिजिटल बैंक्स, अब हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, हमारे पास डिजिटल ऑनबोर्डिंग फ्रेमवर्क है. जो प्राइवेट सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग दैट विल हेल्प व्हेन वी हैव ओपन एपीआई फ्रेमवर्क अवेलेबल, जो हमने पहले भी बात की थी, जहां आपके पास एपीआई अवेलेबल होंगे और जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको कंज्यूम करेगा और कंज्यूम करके अपने यूज़ केसेस नए बनाएगा. और जहाँ वो नए यूज़ केसेस जब वो बनेंगे तो वहाँ से आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी इम्पैक्ट होगा और आपके पास पेनिट्रेशन भी मार्केट के अंदर ज़्यादा होगी. इसी के लिए आई थिंक स्टेट बैंक ने अभी तक एक सैंडबॉक्स का लॉन्च हमने अनाउंस की है और उसका मेन पर्पस यही है जहाँ तक मेरी ख्याल, ताकि वो सैंडबॉक्स नए प्रोडक्ट्स जो है टेस्ट कर सके, लॉन्च कर सके और प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करके उसको सक्सेसफुल बना सके. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. I do want to make a comment on your Islamic banking, at least from a fintech perspective. All the fintechs that we know of, and ourselves included, जब हम customer के साथ मिलके काम करते हैं तो वो उनको चाहिए Islamic banking products हैं. So we are forced to be Sharia compliant and we're forced to think along the lines of Islamic banking. So अगर आप जितने भी पिछले 4-5 साल में जितने भी fintechs देख रहे हैं, especially on the lending side, saving side जो आ रहे हैं, वो consciously decision banate hain to be going towards Islamic banking side because the customer wants that. And if you want to build for the masses, we have to go down that path as to what the customer want as well. So, G, if I can just add a couple of comments to that. I think to answer your question, पहली चीज तो ये है कि जी देखिए, as we talk about what is going to be 2.0, 2.0 is going to be about creating more products and solutions that are more inclusive and resilient and enable people to work some green future.
तो उसमें किसी हद तक तो प्राइवेट सेक्टर लीड जरूर लेना चाहिए, which is where in terms of their innovative thinking, in terms of their desire to go out and leverage technology to do different things for the customers, in terms of their willingness to go out and engage with the customer, to understand their needs and figure out what needs to be done for them, and their willingness to develop new product. So यहाँ तक तो lead जरूर है, लेकिन आई थिंक एट द सेम टाइम उस लीड को फिर इनेबल रेगुलेटर ने करना है. सो वो लीड लेकर आप रेगुलेटर के पास जरूर आना पड़ेगा. तो वो क्या हमें कोई कोई नई प्रोडक्ट टाइप बनानी हो, या वो हमें फॉर एग्जांपल एपीआईज के ऊपर कोई काम करना है, हमें डेटा के लार्ज वॉल्यूम्स प्रोसेस करने हैं और उसके लिए अगर हमें क्लाउड पर लेके जाने की जरूरत है डेटा को, या हमें कोई नया मॉडल, जैसे हमने ज़रई के बारे में कहा कि हमने नई चीज सोची. सो सोच जरूर सकता है प्राइवेट सेक्टर, बट आई थिंक इट विल ऑलवेज कंटिन्यू टू बी अ पार्टनरशिप. इन सम एरियाज द रेगुलेटर्स विल हैव टू टेक, some areas the private sector will have to take the lead, but at the end of the day it will always be a partnership. Great, thank you, Ibrar Saab. We can take another question. It's not a question, it's a sort of a comment. जैसे अभी हमने बात की कि हम अगर बैंक अकाउंट्स की बात करें तो हम बात करते हैं कि नाउ द बैंक अकाउंट शुड नॉट सिंपली बी द बैंक अकाउंट, बट वो एक पूरी आपको एक लाइफस्टाइल बैंकिंग की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें. सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो हमें ये ज़रूर देखना है कि मेरे क्लाइंट की ओवरऑल नीड्स क्या हैं. जैसे मैंने अपनी पहले ओपनिंग रिमार्क्स में बात की कि अगर आप अपने क्लाइंट की वेलबींग की तरफ फोकस्ड हैं, तो उस वेलबींग के लिए आप ये देखेंगे कि जी किस इकोसिस्टम में मेरा क्लाइंट ऑपरेट कर रहा है, एंड हाउ कैन आई कैन बी सॉर्ट ऑफ फैसिलिटेटिंग माय क्लाइंट कि वो उसने जो भी, चाहे उसकी वो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, उसकी वो पर्सनल एक्टिविटीज़ है, उसमें मैंने कैसे उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, ताकि जो एक पूरा आपने उसको, हम जब लाइफस्टाइल बैंकिंग की और लाइफस्टाइल सर्विसेज की बात करते हैं तो पूरा पैकेज उसके पास अवेलेबल. और डिजिटल में ये आपके पास एक अच्छी बात है कि आपके यू आर हैविंग अ ह्यूज वेल्थ ऑफ डाटा अवेलेबल विद यू. तो उसकी बेस पे हमें जो 2.0 इन माय ओपिनियन वुड हैव टू थिंक इन ओवरऑल टर्म्स के कैसे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने क्लाइंट को हेल्प आउट कर सकते हैं, सो दैट द क्लाइंट शुड बी इम्प्रूविंग द इनकम लेवल्स, इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला. तो हमें ओवरऑल बेसिस पे देखना पड़ेगा. अगर सिर्फ ये फोकस किया कि मैंने तो सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज देनी है, तो प्रॉब्ली वो आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो सकेगा. समर साहब ने इस्लामिक फाइनेंस की बात की है. देखिए, इस्लामिक फाइनेंस का भी ऑब्जेक्टिव हमें देखना पड़ेगा क्या है. उस ऑब्जेक्टिव को ज़हन में रखते हुए देन वी कुड सी कि कैसे मैं अपने, वो ऑब्जेक्टिव भी क्या था. ऑब्जेक्टिव इज़ एक ऐसा मुनसिफाना मुआशी निज़ाम देना जिसमें कि सब लोगों को equal business opportunities मिल रही हैं. People are having that risk and reward sharing based access to the facilities. कि ये नहीं है कि there are stronger segments and there are weaker segments and the stronger segments वो enforce कर रहे हैं अपने will on the weaker segments. तो we'll have to see कि objective क्या है. हमें unfortunately हम हमारा रेक्ट्रिक ज़्यादा है, हम बातें ज़्यादा करते हैं. उसके अलावा हमें चीज़ों की शक्लों पे ज़्यादा वो होता है कि इसकी शक्ल कैसी है, इसने दाढ़ी रखी है या नहीं रखी है. इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा, असल बात उसके सब्सटेंस पे है कि सब्सटेंस में क्या वाकई हमने, वो जो मैंने बात सामने रखी थी वो बात है ही इस्लामिक फाइनेंस के प्रिंसिपल पे कि क्या मैं अपने क्लाइंट्स की, अपने स्टेक होल्डर्स की
वेल बीइंग के लिए काम कर रहा हूँ, क्या मैं आसानियाँ पैदा कर रहा हूँ, क्या मैंने वो इकोसिस्टम डेवलप कर दिया है. जब इस तरह फोकस होगा तो देन यू वुड सी कि जी चेंज आएगी. थैंक यू. Thank you so much. I think that's also a really great way. We can take another question. I think we'll थैंक यू सो मच. आई थिंक मैंने एक तो आप सबका सेशन अबरार की बातचीत मैंने बहुत एंजॉय किया. आई थॉट दिस वाज द हाईलाइट ऑफ द डे, ऑल 5 ऑफ यू कंट्रीब्यूटिंग. एक दो चीज़ें मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ. सो दैट एक तो पहली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ दैट इज़ अबाउट इनोवेशन. आई थिंक दिस द नेक्स्ट एरा टू एज समर्स. आई थिंक इट हैज़ टू बी अबाउट इनोवेशन. इट हैज़ टू बी how differently and how quickly can we, achieve different results based on stratas of the economy. Agriculture is just one part of the economy. There are numerous other sectors जिनको हमने देखना है. So we may start to divide Pakistan among stratas और देखते हैं कि वो क्या stratas हैं. That can be a demographic strata, that could be a geographical strata, that could be a business strata. So probably we need to divide the entire country in different stratas and determine how can we improve financial inclusion in that particular area. For example, अगर आप border areas की बात करते हैं जैसे चमन है और आपका तफ्तान है, probably you'll need different kind of products. But then if you talk about Punjab or rural Sindh, you'll need different kind of products. एक तो ये बात हुई. तो आई थॉट कि इट्स अबाउट इनोवेशन एंड इट्स अबाउट द वे यू लुक एट द इकोनॉमी. अच्छा, और तीसरी बात मेरा ख्याल ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनोवेशन कौन कर रहा है. आई थिंक दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू रिकॉल गाइस द टीम सिटिंग है, सलीमुल्लाह साहब, अगर आरडीए की बात ना हुई तो गलत हो जाएगा. रोशन डिजिटल अकाउंट वाज अवर स्टार प्रोडक्ट जिस पे हम सब ने काम किया और इट वाज ऑल अबाउट इनोवेशन. So here was a group of non-resident Pakistanis, 10 million of them. हम उन तक पहुँच ही नहीं रहे थे. But we got to them through Russian digital account and like Salimullah Sahab said and others also, it was about lifestyle banking. पूरी एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट दी. हमने कहा जी गाड़ी भी ले लो, घर का भी लोन ले लो, बिजली का बिल भी पे कर दो, लोन बोरो भी कर लो, डॉलर्स में भी रख लो, रुपए में भी ले आओ, जो करेंसी जिसमें चाहते हो यानी येन में कर लो, euro में कर लो. So we made that happen over a period of few years. So I thought so innovation हमारे लिए नई नहीं है और मेरा नहीं ख्याल innovation पे किसी की भी इजारादारी anybody. But एक चीज़ जो मुझे ज़रूर फाइनेंशियल सेक्टर से कहनी है कि आप हमारी पुश का इंतज़ार करते हैं, which is rather unfair. आप हमारी पुश का इंतज़ार ना करें, आप खुद से इनोवेट करें बल्कि हमें पुश करें. It should be the other way around. आप हमें आके कहें कि जनाब ये मैंने प्रोडक्ट लाया हूँ, अब इसकी तो रेगुलेशन ही नहीं है. So that's the only thing that I like. My message to the banks would be कि यार इनोवेट करो और वो ज़रूरी नहीं कि हर बात आपने हमसे पूछनी ही है. At sometimes it's पूरा आप देखेंगे जो एम-पैसा का मॉडल है केन्या में जो इवॉल्व हुआ, रेगुलेटर से तो पूछा ही नहीं गया. इट जस्ट हैपेंड, एंड पाकिस्तान में सिर्फ we tried to overemphasize on regulations, but financial sector should understand कि innovation लाएंगे तो regulator आपके साथ खड़ा होगा और regulations भी लेके आएगा. So that's what I have to say. But I thoroughly enjoyed your session. I think this was the hallmark of the day. Thank you so much. We can. So Halima, if I could just give one comment here. Ji, of course. Ji, so I think it's a pleasure to see Irfan Saab. I can dare to say that Irfan Saab has been a partner in crime with the industry. I say he's been extremely supportive. I still recall इनके पास हम 2007 और 8 में गए थे मोबाइल वॉलेट की रेगुलेशन की बात करने, तो इन्होंने सबसे पहले कोई एक 1 पेज के ऊपर कुछ ब्रीफ के साथ एक SMS बेस्ड सर्विस का अलाउ किया था बैंक. एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड ब्रांचेस बैंकिंग एंड ऑल ऑफ दैट, टू एक्नॉलेज दैट Irfan Saab and his contribution in getting this journey going.
Ji, Assalamu alaikum. I am Sonia Farooq. I am Chief Human Resources Officer at U Microfinance Bank Limited. I have one question. I think the session and the discussion was very, very interesting and intriguing, and I completely agree to the comment that innovation has to come from anywhere in any segment and from any fintech partner or a financial institution as such. My question is that we have been talking or hearing about the cryptocurrencies, which may be the future of the digital payments yet to come. However, it is still considered as not a legal tender from some of the countries, including Pakistan. So are we, as a state bank and as the financial partners, are we in the right kind of direction where cryptocurrency might be just around the corner, like bitcoins or any other thing, which may become a legal tender very soon, like ChatGPT came and took the economy by storm. So what you say about that, that are we equipping ourselves to be ready to change the form of the money that we are dealing with, or what are we doing on that front? Thank you so much. अच्छा, मेरे ख्याल में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर तो नहीं बन रही है. इनफैक्ट बहामास ने उसको लीगल टेंडर डिक्लेयर किया था, लेकिन अब वो नई लीगल लेजिस्लेशन कर रहे हैं जिस पे उसको रिवर्ट कर रहे हैं उसको. दे आर ऑल्सो गोइंग बैक. तो क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर का तो कोई चांस नहीं है. मेरे ख्याल में एक बड़ी बदकिस्मती हुई है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की बैक पे जो टेक्नोलॉजी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कहलाती है. बदकिस्मती ये हुई कि उस टेक्नोलॉजी की पहली एप्लीकेशन क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में सामने आ गई, जबकि उसकी और बहुत सारी इस्तेमाल हैं उस टेक्नोलॉजी के, जिसमें एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना. मैंने डेटा की बात की, तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम्स की बात हो रही है, और KYC शेयर्ड हम खुद बना रहे हैं पाकिस्तान में PBA के साथ मिलकर, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है. तो वो तो शायद ना हो, लेकिन जो होना आई थिंक जो होगा वो ये कि सेंट्रल बैंक्स इंक्रीजिंगली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे काम कर रहे हैं, विच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फियाट करेंसी, जो हमारी करेंसी होती है, ऑन टू डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर. और उसके अपने फ़ायदे भी हैं और अपने नुकसानात भी हैं, और उस पर काफ़ी काम हो रहा है. खुद स्टेट बैंक भी उस पर काफ़ी जो है वो काम कर रहा है. तो गोइंग फॉरवर्ड जो मेरे ख्याल में ये होगा कि आप करेंसी की एक नई शक्ल देखेंगे जो CBDC की शक्ल में होगी, और वो सेंट्रल बैंक्स इशू कर रहे होंगे. प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज मेरी नज़र में जैसे बिटकॉइन वगैरह है, वो एक्सक्लूजन को बढ़ाती है, वो इंक्लूजन को नहीं बढ़ाती, क्योंकि वो जो लोग उन करेंसीज को यूज़ करते हैं वो फॉर्मल सेक्टर से वैसे भी बाहर चले जाते हैं. तो बिटकॉइन वगैरह तो वो एक्सक्लूजनरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन इंक्लूजन के लिए जो CBDC पे काम हो रहा है, और मेरे ख्याल में उस पर काफ़ी प्रोग्रेस होगी इन टाइम्स टू कम. Thank you, Sohail Saab. Please go ahead, Ms. Saban. Yeah, I think just from a AFI perspective also, हम भी यही ट्रेंड देख रहे हैं जो सोहेल साहब ने कहा. आई थिंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज पे काफ़ी सेंट्रल बैंक्स देख रहे हैं. इनफैक्ट बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने एक सर्वे किया था अबाउट 60 सेंट्रल बैंक्स का. उसमें काफ़ी ज़्यादा आर लुकिंग एट CBDCs. AFI मेंबर्स में से भी बहुत ज़्यादा इसको देख रहे हैं. एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप उनसे पूछें कि आप क्यों इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन टेंड्स टू बी वन ऑफ द टॉप रीजंस फॉर व्हाई सेंट्रल बैंक स्पेशली इन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज आर लुकिंग एट CBDCs. उसमें से इन आर मेंबर कंट्रीज आई थिंक Nigeria has launched a pilot, Ghana has launched a pilot. So वो countries definitely CBDCs पे advance करी, and main reason being financial inclusion. So it's interesting to hear कि State Bank भी इस पे काम कर रहा है, but it's still in a very early stages where some countries are at pilot stage, others are still looking at कि क्या model adopt करना है and all. But it is definitely linked to financial inclusion. So it's an interesting conversation to keep having. Thank you. Great, thank you so much. I will take this opportunity to close this panel. It has been a very, very insightful discussion. And like Salimullah Saab also said, where the new era that we are getting into, it is more about lifestyle financial services. And as financial industry, we should be looking at more collaborative opportunities and create more innovative processes and products to include more and more demographics. And I would like to
thank you so much for taking out your time and being so generous with your time for this discussion. Appreciate it. Thank you. Just a few moments more. Yes, I would like to invite Mr. Salimullah, Deputy Governor, State Bank of Pakistan, to please hand over token of appreciation to our esteemed panelists. Thank you so much for such an enriching discussion. Starting with Ms. Halim Iqbal. Suhail Jawad Sahab. Ms. Aban Haq. Ms. Abant has specially traveled for this session, and she just arrived last night. So thank you so much, ma'am. Yes, she was associated with State Bank earlier. Mr. Ahmed Salimi Sahab. And to collect the souvenir for Mr. Abrar Mir, I would like to request Mr. Rehan Abbasi Sahab to collect the souvenir on his behalf. I hope all of you actually enjoyed the discussion. It was very engaging, so many different perspectives were presented. And to present the award, to present a token of appreciation to DG Sahab, Mr. Salimullah, the Managing Director, Mr. Basit Ali, has done the honors. Thank you, everybody. Thank you for joining us here. I request you all to take your seats in the front. The session has not concluded as yet. We have vote of thanks. Please settle down. For the vote of thanks, I would like to invite Executive Director, State Bank of Pakistan, Syed Samir Hasnain Sahab, to please come on the stage. थैंक यू साना। वो जब सलीमुल्लाह साहब का सेशन शुरू हो रहा था तो मैं देख रहा था कि 1/3 चले गए थे और अब जैसे ही इन्होंने ये ख़त्म किया तो आधे और चले गए थे। अबान, आपको याद होगा 10 साल, अब मेरी कोई स्पीच नहीं है, आई विल नॉट टेक मोर देन 2 minutes, यू सी, जस्ट
vote of thanks. लेकिन अमान आपको याद होगा कि almost a decade back, you see, it was in Riviera Maya, एक आफी की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और अचानक एल्फ्रेड ने उसमें आउट ऑफ द ब्लू कहा कि आप में से कोई कुछ कमिटमेंट करना चाहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से तो करें, और मेरी तरफ देखा और मैं आ गया स्टेज के ऊपर विदाउट एनी प्रिपरेशन. सो आउट ऑफ द ब्लू मैंने जब उन्होंने पूछा तो मैंने उनसे कहा कि माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वुड बी टू हैव फाइनेंशियल इंक्लूजन इनकलकेटेड इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान, और वो वहाँ रिकॉर्ड हो गया उसके अंदर. सलीम साहब, आज आपने जो कहा prosperity of individual, prosperity of each Pakistani. So it absolutely aligns with that. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum and very good noon. It's an honor for me to thank you for your active participation in that. We started today's journey with MD Saab's inauguration. It was very good. And then video was run, which very eloquently explained as to Pakistan's journey. Mr. Mikuel, lead financial sector, World Bank, then explained the international and global perspective of that. Then Governor Saab presented State Bank of Pakistan vision about financial inclusion and financial literacy. 5 साल आगे हम कहाँ देख रहे हैं, 75% के ऊपर financial inclusion को in terms of unique active accounts. उसके बाद फिर जब सेकंड सेशन शुरू हुआ तो सलीम अल्लाह साहब आपने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया कि हमारा क्या विजन 2.0 क्या होना चाहिए, सिर्फ अकाउंट खुलने से नहीं, क्योंकि अकाउंट्स के नंबर आपने देखे हैं, अगर एक्चुअल अकाउंट जो मल्टीपल हैं वो भी अगर देख लें तो अकाउंट्स की तादाद इस वक्त पाकिस्तान में 180 मिलियन है, 180 मिलियन, और इसमें से यूनिक एक्टिव अकाउंट्स 83 मिलियन है. लेकिन उनका यूजेज क्या हो रहा है, कितनी दफ़ा वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या वो अल्टीमेटली उस फ़ायदे के लिए हैं जिसके लिए एक इंडिविजुअल ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को ऑप्ट किया था, जैसा आपने बताया वो अल्टीमेट हमारा 2.0 का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. सोहेल जवाद साहब ने सेंट्रल बैंक का मुकदमा पेश किया बहुत अच्छे अंदाज से. अबान आपने ग्लोबल उसका प्रेजेंट किया, अब्रार मीर presented perspective of commercial banks, सलीमी साहब ने मार्केट perspective उसमें बयान किया. हलीमा आपने बहुत अच्छा इसको मॉडरेट किया. Again, I want to thank each and every one of you who's present here in name. I wish के नाम होते तो मैं एक एक का नाम लिखे कहता अगर लाइन ठंडा ना हो जाता तो, but again I want to thank you for your participation. Thank you very much. Thank you so much, everybody, and Mr. Samir Hastan Sahab. And this brings us to the close of the ceremony. But let me share another interesting thing that is happening around Pakistan right now. While we are gathered in this auditorium and having, celebrating excellence in financial literacy awards and engaging in different discussions, Pakistan भर में 90 से ज़्यादा schools, मुख्तलिफ हमारे जो 16 BSc offices हैं, वहाँ पे they are engaged in a poster making competition. So kids from in the age group of 11 to 15 years, they're imagining a world which is cashless, which is all digital, and they are drawing them on the posters. So ये activity पूरे पाकिस्तान में अभी हो रही है, and more than 2,000 students are actually engaged in this activity. Kudos to all the stakeholders. कल से banks जो हैं 160 camps लगा के मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में, districts में फाइनेंशियल लिटरेसी ना सिर्फ मनाएंगे बट इंक्लूजन भी इनेबल करेंगे. तो गुड लक टू दैट. एंड yes, the refreshments are open. You may join us for refreshments now. Thank you so much for your time, for your patience, for engaging in discussions with us, and thank you for your presence. Have a good day. Allah Hafiz. Before we leave, sir, Mr. Sareemullah Sahab, Irfan Sahab, Samar Sahab, और हमारी टीम्स प्लीज स्टेज पे आइए और हम एक ग्रुप फोटो लेना चाहेंगे. आबिद कमर साहब, सुहेल जवाद साहब, प्लीज हमें ज्वाइन करें ग्रुप फोटो के लिए. जी सर.
Dr. Farooq Arbi Saab, please join the stage.